के लिए सब लोग नीचे जाएंगे और भोगार्पण होगा। भोगार्पण के बाद फिर पुष्पांजलि होगी और फिर आरती होगी और आरती के बाद आप सब मंदिर जाएंगे, वहीं पे सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है और फिर 5 बजे हम इकट्ठे होंगे इस्कॉन और मंदिर में। तो कृपया करके सब अपना स्थान ग्रहण करें, तो कुछ ही भक्त यहाँ पर रहेंगे। भोगार्पण के बाद पुष्पांजलि, फिर आरती और आरती के बाद सब प्रसाद ले जाएंगे मंदिर। अभी भोगार्पण होगा और साथ साथ में भजन गाएंगे जिस मोहन का महोत्सव की परम पूजनीय गोपाल महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर दी मैंने, इसने रिकॉर्ड कर दिया हाई डेफिनेशन। जूम नहीं है इसमें। हरी बोल, हरी बोल। आप लोग कृपा करके बैठ जाइए। सदा शिवकाय
Saksarunitangena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Brahmane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarani Nirvishesha Shunyavadi Paschatpadashatadine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Devoti Vachara Pandu Rangayate Girim Yat Kirta Dhanaham Bhakti Shri Guru Nityananda Pavanavadha Shri Chaitanya Ishvara. First I want to tender my apologies that I wanted to go. I had actually some doctor's appointment from 10:30 till 2. So at first I thought, well, I'll try to get in at 9:30, but then they told me Guru Maharaj only left until about 10 or something, so it wasn't, it's a half hour to the Apollo hospital for that. Plus I had a slight fever in the morning. Then in the, so then there was a chronic healer who was doing healing from 7 to 8. So as soon as that was over, I ran down here. So that, and Gopal Krishna Goswami, he wanted to apologize and sitting on his throne. I told him, it's your Vyasa Puja. He's the representative of Vyasa Deva today, so there's no apology due. We offer him all respect. I'm very happy to give him a garland as well as a gift of present. Hare Krishna. आप सबको समझ आ रहा है? Are you getting Maharaj what is saying, or you need translation? You need Hindi translation? If you need Hindi, raise your hands. I will. So you have to translate. महाराज ये क्षमा मांग रहे हैं कि सुबह आना चाहते थे, लेकिन महाराज का थेरेपी चल रहा है जो अपोलो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट 10:30 से 2 बजे तक था, तो महाराज आ नहीं पाए। और गोपाल कृष्ण महाराज ये बोल रहे थे कि आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूँ। तो जब तक महाराज ने कहा कि इसकी अपॉलॉजी की क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपका व्यास पूजा है और आप व्यास देव को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये आपका व्यास पूजा है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। So our association together begins in 1968. ISKCON Montreal with Gopal. हमारा जो संघ है वो इस्कॉन में 1968 से चालू हुआ और इकट्ठे मॉन्ट्रियल मंदिर में थे। So he was actually residing in Montreal and I was just visiting there. गोपाल कृष्ण महाराज मॉन्ट्रियल में ही रह रहे थे और मैं वहाँ पर गया था, अभी नया गया था। And we always saw him as a very most sincere young devotee. हमेशा उनको देखा, महाराज बहुत ही एक सिंसियर और बहुत ही जिम्मेदार डिवोटी थे, भक्त के रूप में उनको देखा। He would chant his rounds loud and clear, and he would chant as far as I could understand. But one round, if I really वो उनका जो जप था बहुत ही स्पष्ट और साफ और उच्च स्वर में था,
और बहुत अच्छे से वो जप करते थे और अलग अलग फ़ोटो के सामने, जैसे राधा कृष्णा अलग अलग पिक्चर के सामने वो जप करते थे। At that time he was very dear to Srila Prabhupada, right from the beginning, and Prabhupada was calling him for some private discussions. वो बहुत ही प्रिय थे प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी उनको निजी वार्तालाप के लिए भी काफ़ी बार बुलाते थे। I heard that he and one Acharya Rishi were the first members of the Vrindavan Mayapur Trust. मैंने ये भी सुना है कि महाराज और एक अत्रि ऋषि प्रभु ये पहले दो थे जो मायापुर वृंदावन ट्रस्ट के ट्रस्टी जो बने थे। So this shows how dear they were to Srila Prabhupada, how trusted he was. This shows how trusted he was to Srila Prabhupada. इससे पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद कितना विश्वास था प्रभुपाद जी का महाराज के प्रति। In 1970, I was sent to India. 1970 में मैं भारत में आया। And at some point he went to New York, so we didn't have association for a while. So फिर महाराज बीच में एक बार न्यूयॉर्क भी गए तो कुछ समय के लिए हमारा संग नहीं बना, संग नहीं रहा। But then after some time, I think Prabhupada got him married, but it was not a success, and he decided to take, I think whatever happened, I don't know exactly, but he ended up taking sannyas. मुझे अच्छे से ज्ञात नहीं, लेकिन उसके बाद महाराज का शादी हुआ, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर महाराज ने संन्यास लिया। So he came to India and he was in charge of the VVT publication. वो फिर भारत में आ गए और फिर वो भक्तिदाता बुक ट्रस्ट जो बीबीटी है उसके संचालक थे, उसके जिम्मेदार व्यक्ति थे। For some time I was also made a trustee of the Indian Trust, and I was a trustee also of the International Trust for some time, so I got a lot of association with my Guru Maharaj. मैं भी कुछ समय ये ट्रस्ट का मेंबर रहा और इंटरनेशनल ट्रस्ट का ही मेंबर रहा। इस प्रकार से महाराज का संग मुझे प्राप्त हुआ। All of our books we were getting from him at that time, and then Prabhupada authorized me to publish some books too. उस समय हम सारी बुक्स महाराज से प्राप्त करते थे और श्री प्रभुपाद ने मुझे कुछ बुक्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी दी। Now he's the sole trustee, international trustee for all India. और अभी गुरु महाराज पूर्ण रूप से भक्तिदाता बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और इंटरनेशनल ट्रस्टी भी हैं। So I was in eastern and southern India, and that time Prabhupada mainly in eastern India, and he was in northern India and western India. उस समय मैं प्रचार करता था पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में, और महाराज उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में प्रचार कर रहे थे। So originally maybe there was a little competition between us. शुरू में हमारे बीच में कुछ प्रतिस्पर्धा भी थी। Later that grew into a very deep friendship. बाद में हम बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। And so out of respect for his dedication, I always let him be the chairman of the bureau of ISKCON. मैं महाराज का हृदय से आदर करता हूँ, और महाराज जो ISKCON ब्यूरो है उसके भी चेयरमैन हैं। Vice chairman. मैं वाइस चेयरमैन हूँ। So his assistant. मैं उनका असिस्टेंट हूँ एक। But he's
whenever there's any challenge facing ISKCON, he literally loses sleep at night, and he's very much he's thinking how to make ISKCON be successful. जब भी ISKCON के सामने कुछ चैलेंज आया है तब महाराज ने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से और महाराज हमेशा उसमें एफर्ट डालते कैसे ISKCON को इस चीज़ से निकाला जाए. And I try to help them, but he takes so much load himself. महाराज इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी लेते हैं, बहुत कार्य करते हैं. So you see now that like he's have all of you seen his deities? I mean, he has hundreds of shilas and Karnatai deities, and he worships them every day. आप सबने देखा होगा महाराज के पास गौर निताई हैं और बहुत सारी कई 100 शिला हैं और महाराज रोज नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं. See, first he does the normal artis to the different deities wherever he visits. जहाँ भी महाराज जाते हैं जिस भी मंदिर में वहाँ पर मंगला आरती भी करते हैं. I mean, he actually does the puja for the deities. They all do mangal arti. हम सब मंगला आरती गाते हैं पर महाराज अर्चा विग्रह सेवन करते हैं. So when he's in Mayapur, he likes to do the Panchatattva deities, and sometimes he does the Prahlad Nrsimha deity. जब महाराज मायापुर में होते हैं तो मोस्टली वो पंच तत्व ऑल्टर में आरती करते हैं और कभी-कभी नरसिंह ऑल्टर में भी करते हैं. As I travel around the world, I always meet the Maharajas, disciples in America, in Canada, and different places. जब भी विश्व भ्रमण में निकलता हूँ तो मैं महाराज के अलग-अलग शिष्यों को मिलता हूँ अमेरिका में, कनाडा में. He mentioned yesterday a little bit just in passing that some devotee he sees a place in Idaho. कल कुछ वो बता रहे थे कि एक भक्त जो आइडाहो में रहते हैं उनके बारे में. Have you ever been to Boise, Idaho? कभी आप बॉइजी में गए हो जो आइडाहो अमेरिका में है? महाराज पूछ रहे हैं. See there, he has a disciple that built a Radha Krishna temple, a big temple, quite significant temple. वहाँ पर महाराज के एक शिष्य हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मंदिर का निर्माण किया है, राधा कृष्ण मंदिर का. I was quite impressed by the temple, and I visited I think on 2 occasions, and like this he has disciples up there who are doing a very significant sevas. मैं वहाँ पर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उस मंदिर को देखकर और मैं 2 अवसरों पर उसको मैं वहाँ पर जा चुका हूँ और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ उनकी श्रद्धा से, उनकी डेडिकेशन से जो महाराज के शिष्य की है वहाँ पर. So in Montreal and Toronto and in different parts of Canada, he was I think he still is the GBC there. At least he was the GBC for a long time, and he has a lot of French and English. He's a very learned scholar of the Bhagavad Gita. महाराज कनाडा के अलग-अलग भागों में जीबीसी रहे हैं जैसे टोरंटो, मॉन्ट्रियल में. महाराज को फ्रेंच भाषा भी आता है और जो कनाडा का फ्रेंच पार्ट है वहाँ पर भी प्रीच किया है महाराज ने. I think this is the 3rd Vyasa Puja, if not more, but at least the 3rd that I've attended. One I was just happened to be in Mauritius at his Vyasa Puja time, and once in Russia. और जहाँ तक मुझे याद है मैं तीसरी बार महाराज का व्यास पूजा अटेंड कर रहा हूँ. एक बार से मैं विजिट किया था, दूसरी बार रशिया में और तीसरी बार अभी यहाँ पर. She also you can speak in Russian, and I
I didn't see the hall, but there was a very big hall in Russia, packed with devotees. 1,000 plus devotees. और महाराज को रशियन भाषा भी आता है, और मैं जब वहाँ पे रशिया में था तो मैंने देखा एक हॉल पूरा भक्तों से भरा हुआ है, 1500 भक्त थे वहाँ पर। One thing about his choruses is that you must have all noticed that how he's always glorifying Krishna, and he's always very strictly keeping to Srila Prabhupada's teachings. एक मुख्य बात है गुरु महाराज के प्रवचनों की कि वो ये है कि उनकी जो वो अपनी कक्षाओं में वो राधा कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और अपने जो प्रवचनों को श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं के अनुसार ही रखते हैं। So I'm very fortunate to have this association in the past 20-30 years in India. मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे पिछले 20-30 साल से ये संघ प्राप्त हो। And I always try to get his association a bit whenever I'm in Bombay or Delhi. और जब भी मैं वृंदावन, बॉम्बे या फिर दिल्ली में होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ महाराज का संग मुझे प्राप्त हो। I think people don't understand how difficult it is actually to manage in ISKCON. It's not as easy as it seems. लोगों को शायद ये नहीं पता है, लेकिन ISKCON के बीच में मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। ये दिखने में लगता हो लेकिन इतना आसान नहीं है। A small temple with about in Tennessee with about 15-20 devotees. The GDC asked one president, who the president, to manage the temple for 2 weeks while he went to some meetings. जैसे कोई छोटा मंदिर भी है जहाँ पर 15-20 डिवोटी हों, वहाँ पर टेनेसी टेम्पल में वहाँ पर प्रेसिडेंट है, और कि ये एक उदाहरण है हमारे सामने कि ये जो टेनेसी का डिवोटी है जो वो कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष थे, वो 2 हफ्ते बाद वापस आए। That person who was in charge threw the keys down on his feet. I'm leaving. I cried. Everybody comes to me asking for this and that. I can't take it anymore. I'm leaving. तो वो जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था 2 हफ्ते बाद वापस आए, और वो अपने चाबियां अपनी फेंकी। वो कहते मैं ये मैनेज नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। कोई ये मांगता है, कुछ मांगता है, I'm just going, मैं जा रहा हूँ। So who can imagine that he's been for so many years managing the whole northern and eastern, western India, so many temples, and so many people coming to him with problems, and he's been taking it all and resolving their issues. आप ये अनुमान लगा सकते हो कि महाराज इतने वर्ष से इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। उत्तरी भारत में और पश्चिमी भारत में और पूरे विश्व में कितने सारी प्रॉब्लम आती हैं मंदिरों में, और महाराज को मैनेज करते हुए आज भी यहीं पर हैं। Of course, here sitting in this temple when that time the Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, he was giving an inaugural speech, and this temple is just one of the monuments and tribute to the great service that His Divine Grace Gopal Krishna Goswami has been offered to Srila Prabhupada. ये जो मंदिर महाराज ने बनाया है, ये एक बहुत ही
बड़ी श्रद्धांजलि है श्रील प्रभुपाद को। और मैं जब इसका उद्घाटन हुआ था तो उस समय मैं यहीं पर था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ उद्घाटन का भाषण दिया था। So, of course, we have the opening of the Longman Center, and then in the second phase, what's it called, Heaven on Earth. All these things are under his direction. हमने बॉम्बे में भी मंदिर का दूसरा भाग बनाया, हेवन ऑन अर्थ, वो सब महाराज के दिशा निर्देशन में बना है। So seeing his successes in India, which these are not limited to these two temples, there's so many other, seeing his successes, the DBC has also made him a co-DBC advisor. I'm sure that they want him to duplicate, to help in seeing that a big temple, the envision will get built. महाराज की सफलता को देखते हुए कि भारत में उन्होंने कैसे सफल तरीके से प्रचार किया और प्रबंध किया, तो जीबीसी कमेटी ने महाराज को मायापुर का को जीबीसी बनाया है। मैं आशा करता हूं कि वहां पर भी एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा जैसे श्रील प्रभुपाद चाहते थे। Everybody likes to hear funny stories, but actually he's a very serious devotee. I'm trying to think of some funny story. सबको कुछ हंसी मजाक वाली कहानी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन महाराज बहुत ही सीरियस डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। I hope that he forgives me if I made any offense to him. मैं आशा कर रहा हूँ कि अगर मैंने कोई महाराज के प्रति अपराध किया तो वो मुझे क्षमा करेंगे। As we see that he has a vision and we're trying to work together. Before I was sick, we would attend all the RGB meetings and different Indian national meetings in order to push forward the movement here in India. मैंने हमेशा देखा कि महाराज के पास एक विजन होता है। जैसे मैंने महाराज के साथ बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड किया, जैसे आरजीबी की या आईसीसी, अलग-अलग मीटिंग। Of course, we see how much inspired he is to push on the book distribution, and he personally goes out and distributes books. हम देख सकते हैं कि महाराज के अंदर कितना उत्साह है पुस्तक वितरण का, और कई बार स्वयं भी महाराज जाते हैं। गोपाल कृष्ण के सामने प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो पुस्तकें वो आधार हैं। गुरु महाराज बुक्स पब्लिश भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखते हैं कि अच्छे से हो। प्रभुपाद ने बोला कि पवित्रता ही शक्ति है, तो महाराज बहुत पवित्र हैं। Utility is the principle. It's always using very practical means to solve the problems and stuff. और उपयोगिता ही सिद्धांत है, और महाराज बहुत कुशलता से इसको उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। Preaching is essence, is constantly preaching. तो प्रचार ही सार है, और महाराज निरंतर रूप से प्रचार कर रहे हैं। I think the audience who took shelter at his lotus feet, they're very fortunate, and they should stay there. They should take his good advice. तो सभी भक्तों को गुरु महाराज के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए। ओके, तो जिन्होंने शरण लिया वो बहुत भाग्यशाली हैं, और महाराज से शिक्षाएं और शिक्षाएं ग्रहण करें।
I always consider myself a servant of his servants, so I'm your servant too. मैं हमेशा ये आशा करता हूँ कि मैं महाराज के दासानुदास बनूँ। आपका सेवक है। महाराज सिंह, मैं आपका सेवाकार हूँ। So I could go on, but क्या बोले महाराज, क्या बोले? anytime there's any problem in ISKCON, India or somewhere, a lot of the time I can expect a phone call from him and we'll discuss. So I'm not at liberty to tell you what our discussions are. जब भी कोई प्रॉब्लम या कुछ आता है ISKCON में, हमेशा महाराज मुझे फ़ोन करते हैं और मैं अभी यहाँ पर जो हमारी डिस्कशन होती है वो तो मैं नहीं बता सकता। Also, when I suddenly was attacked by the stroke on October 23rd, many people had given up on me, and I was his Gopal Krishna arranged with the Hindujas for me to stay at the hospital and at some discount. जब मुझे वो अटैक हुआ था 23 अक्टूबर को, तो हिज डिवाइन गेस्ट गोपाल कृष्ण महाराज मेरे साथ रहे और उन्होंने मेरे लिए हिंदुजा में अरेंजमेंट किया और डिस्काउंट भी दिलवाया। I was unconscious at that time in the coma, but I heard from the disciples that he was a source of great strength to them and encouragement to don't worry. Guru Maharaj will pull out of this. मैं तो उस टाइम बेहोश था, कोमा में था, लेकिन मेरे शिष्यों ने मुझे बताया कि महाराज उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण थे। उनको हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि कुछ नहीं होगा, महाराज को कुछ नहीं होगा, महाराज इस चीज़ से निकल जाएंगे। So I hope he has a long life and that he's able to continue preaching voice, following the footsteps of Srila Prabhupada. मैं आशा करता हूँ कि महाराज की लंबी स्वास्थ्य भरपूर्ण जीवन होगा और महाराज ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे। महाराज ने ये भी बोला था बीच में कि उस समय शिष्यों के पास और कोई आशा नहीं थी, लेकिन महाराज ने वो हॉस्पिटल अरेंज किया जब महाराज को अटैक हुआ था। तो इट्स अ बिग, मतलब महाराज ने बहुत बड़ा योगदान दिया उस समय। और ये शिष्यों की तरफ से बोल रहे हैं कि हम बहुत ही आभारी हैं गोपाल कृष्ण महाराज के कि उनकी वजह से आज भी हमारे गुरु महाराज हमारे बीच मौजूद हैं। Hare Krishna. I'll speak straight anyway so Maharaj can understand. I want to thank my dear Godbrother Jayapataka Swami Maharaj for coming and speaking these kind words. Maharaj, being an advanced Vaishnava, was extremely generous and kind, and that's the nature of a Vaishnava. He always sees the good in everyone. Jayapataka Swami and I, as you heard, our association started in Montreal in 1968. Maharaj joined the movement, I think, in San Francisco, isn't it? And at that time, America was involved in the Vietnam War. And the American devotees would cross over to Canada. But Maharaj, from the very beginning, was a very intelligent, dedicated, fully surrendered disciple of Prabhupada. He would chant his rounds very attentively, ask Prabhupada a lot of questions after the lectures. In fact, once Maharaj Prabhupada gave a lecture,
Prabhupada stayed in Montreal for 3 months, from June 68 to September 68, August. And Prabhupada was lecturing Monday, Wednesday, Fridays and Sundays in the temple. So once or twice Jayapataka Swami was not there, and Prabhupada would say, "Where is Jayapataka?" Because he would always ask very intelligent questions. So Jayapataka Maharaj was a very, very serious devotee from day one. I remember at that time our temple was very short of money. Our budget was only $500 a month, and we couldn't even afford $500 a month. So many of the devotees were doing jobs. And Maharaj, you went into the job in A&W Root Beer. And Maharaj went into the job cleaning the tables just so that we could have money to pay the rent. So, and then Maharaj went to Toronto from Montreal in '69, and because we just opened the temple in Toronto, and I think he became the president of the Toronto temple. Then Maharaj became the president of the Toronto temple, and then around 1971, Prabhupada was planning to launch an attack on India. Prabhupada had opened the temples in America, but now he wanted to come back to India to save India. So Prabhupada wanted to bring 100 disciples from the West to India. And I think Jayapataka Swami was in the initial batches, isn't it? Was of the batch of, Achyutananda was first. He came to India in 1970, 1970 he came to India. And then he was the temple president in Calcutta for a long time. And then Prabhupada posted Jayapataka Swami to Mayapur, and he and another devotee called Bhavananda Prabhu, they were both the co-directors of Mayapur, and Jayapataka Swami is still the co-director of Mayapur. So Mayapur, as you know, has progressed tremendously, and is ISKCON's principal project, and Prabhupada wanted a major temple there to fulfill the vision of Thakur Bhaktivinoda and Lord Nityananda, and we have obtained the permission now to start work on this new temple. And very soon, ISKCON is going to start work on the big temple in Mayapur, the big planetarium. So Mayapur progressed tremendously. Mayapur is one of the best managed temples in ISKCON. Even when 5,000 devotees go there, 7,000 devotees come there for the festival. You may have noticed everything is managed so perfectly, isn't it? Prasadam and time, everything is so the Mayapur management grew under Jayapataka Swami's supervision, and Krishna sent him some very nice disciples who have taken on a lot of responsibility and are very nicely managing Mayapur. Maharaj has been a very active preacher, traveling all over the world. In fact, devotees everywhere were just amazed at Maharaj's energy level. He would fly from one continent to another continent. And we still see that Maharaj has the same preaching spirit. Even we were in Coimbatore together also in the month of May. I had gone for 3 weeks of Panchakarma, and Maharaj was my neighbor. He was there for 5 weeks. We were in neighboring houses. But I saw over there, even though Maharaj was just recovering from his attack, he was still doing a TV lecture every evening, and the lecture was going on the internet to devotees all over the world. So Maharaj had a major stroke last year, October. Mature life is full of uncertainties, and no one can say what's going to happen to anyone. And doctors had given very small chance of real survival. But due to the prayers of devotees around the world,
in Maharaj's long dedicated service to Prabhupada. Maharaj has recovered fully almost, except his speaking has improved 100% since last year, since a few months ago. His memory is 100% intact. Actually, Shrita Hinduja had come to see Prabhupada, had come to see Maharaj a few months ago in Jew temple. He said he's just surprised. The doctors are also all surprised to see the rapid recovery that Maharaj has shown. So Maharaj is the senior-most sannyasi in ISKCON, and I also took sannyas from Maharaj, and most even sannyas, more devotees than any other sannyasi guru. And Maharaj has a long record of dedicated service to Prabhupada. He was very active in the GBC, and a lot of the legislation in the GBC passed had his stamp. He had a very sharp legal brain. He could have been a top-notch lawyer if he wasn't a devotee. And so we're very happy that Maharaj is here. Of course, our prayers are that Maharaj goes on recovering, so he can resume his preaching like before. And I want to thank him for being very kind in an offering today. Hare Krishna. ईश्वर जब काका स्वामी महाराज की, ईश्वर गोपाल के स्वामी महाराज की, तुम्हारे बीच में अक्षरधाम मंदिर से स्वामी जी आए हैं, ज्ञानमुनि स्वामी, मनोविजय स्वामी, भक्त नामदेव और प्रेम स्वामी। अक्षरधाम मंदिर These are some very nice sannyasis from Akshardham, Brahma Swami Narayan. This is Gyan Muni Swami. Please give him a warm hand. We have Mahavijay Swami. Dr. Namdev. You're from Chicago. There's 3 of these 4 Swamis are from America. He's from Houston, brought up in Houston. You're from Portland, Chicago, and Ahmedabad. The Swami Narayans have a very good practice. If the father, the Swami Narayan, encourages his son to become a brahmachari, this is something your devotees can learn something. You're very pleased. Please bless. This is my senior Chakra Swami Maharaj. You meet him also. Maharaj and Maharaj. These are Maharaj Swamis from Swami Narayan Temple. Another process is white. I just wanted to mention that Maharaj said I was almost fully recovered, but my survival was, as Maharaj said, with the prayers of the devotees. I think this idea that I'm almost fully recovered has made the devotees stop praying. And so like recovery is stopped. Still got
half my face paralyzed, eyes are movement. As you see, I'm not able to walk without help. So I still got a way to go. So your prayers should be welcome. How do you go? तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जैसे महाराज ने कहा कि मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। ये सही है कि मैं भक्तों की प्रार्थनाओं के द्वारा ठीक हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। अगर ऐसा रहेगा तो भक्त लोग हो सकता है प्रार्थना करना बंद कर दें। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी मेरा जो मुंह है, आधा मुंह है, उसमें भी लकवा है। मेरा हाथ पूरी तरह नहीं चल रहा, मेरी आंखें पूरी तरह नहीं चल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भक्त लोग प्रार्थना करते रहें, मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊँ। Also, you see, according to ISKCON law, we can only have one day of Vyasa Puja, but everyone's allowed to have one day. And I'm also born on Ekadashi, and Maharaj is born on Ekadashi. So our Bengali devotees are not so surrendered. They don't consider a feast if they don't have rice and roti. जैसे ISKCON लॉ के मुताबिक एक दिन का व्यास पूजा होता है। मेरा भी व्यास पूजा और महाराज का व्यास पूजा दोनों एकादशी को आता है। और जो बंगाली भक्त हैं वो इतने समर्पित नहीं हैं, क्योंकि उनको जब तक चावल और दाल नहीं मिलता है वो फीस्ट, उसको फीस्ट नहीं माना जाता है। The next day we have a feast for everyone on the Dwadashi. द्वादशी के दिन एक बड़ा फीस्ट होता है सबके लिए। I don't know if you have them, but you should have a nice feast. मुझे पता नहीं ऐसा है, पर आप सबके लिए भी फीस्ट होना चाहिए कल से। Hare Krishna. So we are very grateful on behalf of all the God brothers and on behalf of His Holiness Gopal Goswami Maharaj. We are very grateful to Maharaj, to you. So now I think it is your time.